Hello, hello, hello. ठीक है भाई. हाँ. So hello everyone. अच्छा वैसे ये तुमको भी एड स्क्रीन दिख रही होगी. फिर से स्टार्ट करते हैं. So hello everyone. I am Anmol and I currently study in BITS Pilani Hyderabad campus. I am right now in third year. My third year is ending right now. I have my exam examinations in few days. So basically, what I've done today is I don't like studying since past 2 to 3 months, right? But I have my placements upcoming. I have my exams upcoming. I want to do something. I have a project to submit by 20th. Yet I don't know anything. So here I have literally just went all out and I've like said to you, right? So anybody who comes, anybody who sees, just see that I am literally zero right now. I'm starting this thing with you guys, right? So today I am trying to develop a web application. I'm trying to learn web dev from scratch. I don't know nothing. I don't know anything, right? I know zero. So I'll just be using YouTube tutorials and everything. No copyright. If I don't know how copyright and everything works, so this is just for learning sake, so that I can interact with you guys, so that we can be in this together. I don't know how many V's are there, but yeah, we will be in this together. So right now it's 3:15. I'll start my web dev journey on 11th April at 3:15 in the morning. Right now with you guys. So here we go. It's working. So I was following a couple of tutorials, and it shows me like what all we'll be needing. So I've written Node.js, Java, MySQL, and IntelliJ IDE. So right now I'm going on to install IntelliJ IDE right now. So I've downloaded it using this community ones. So I'll close this tab. I have a lot more tabs going on. Then I don't know how I'm gonna deal with that. But anyways, so I'll go and install this idle IDE whatsoever it is. Let's see what is happening. Till then, I'll do one thing. I'll see if the YouTube audio which I'm playing is audible to you guys or not. Oh, nice. BBK one's uploaded again. No distractions. I'll search my channel if it is visible. Oh, nice. It's visible. So I'll go here. I'll subscribe to my channel. I'll okay. Now Which is free and you don't need to pay for this. So let's download the commit version. So once this executable file is downloaded, just go to the folder location. So once this executable file is downloaded, just go to the folder location. okay, so I will do that. Cool. इसको बंद करते हैं. Now it's opening. ठीक है. I'll install this ideal IDJE. I was following this tutorial. To install, click next and skip everything before. Next. What? Install. It's taking This will 2.8 install GB. the IntelliJ idea into our system. Any special commands?
and next, and just keep everything default. Nothing. So next, it will cause JetBrains. Okay. Click install. So this will basically install that in like. And once this is done, just click on finish. And let me just go for start menu here and search for IntelliJ and click enter. So this will basically install our IntelliJ community project. So just click on do not import the setting and click OK. And this opens the IntelliJ. So we want to create. Okay. So let this happen. Till then, I will check if I have Java installed in my laptop or not. How to check if I have Java installed in my laptop? There is some command, this Java version, right? There is this command to check Java version in CMD, right? I was searching for this one. Will it work here? Okay, I have Java already installed. I have Java 17. So Java, although it says 16, but I guess 17 should be fine. I don't know what it should be. Uh, Long shot, but nobody's watching, right? Yeah, nobody's watching. Cool, cool, cool. So I have Java installed. IDJ is being That means installed. our project. So just click on this new project, and this will automatically detect the Java versions installed into your. Okay, it shows me all these things. I'll adjust my camera. Cool. So I have found out this tutorial. See, it is of 48 minutes. I mean, I can go through the 20-hour lecture and everything, but right now my priority is to develop a project whatsoever be the case, right? So I'm trying to just go deep into that, right? I'll learn along with you guys only. I'll use ChatGPT, I'll use Brave, I'll use Google, everything which I can. Uh, I mean, we'll do this together. I don't know how I'm gonna do it, or maybe if I am going to succeed in this or not. But yeah, let's try this. Cool. Hey DJ installed हो जा. Oh, तेज हो रहा है. Nice. यार एक्चुअली मेरे लैपटॉप में स्पेस का बहुत दिक्कत है. सिंस माई लैपटॉप इज Lenovo S340, उसमें स्पेस का थोड़ा सा दिक्कत है. इट ओनली हैज 512 GB एंड मैंने इसको डुअल बूट भी नहीं किया. सो आई फिनिश दिस. नाइस इंस्टॉल हो गया है. तो इसके बाद IDJ, oh sorry, intelligence, this is right, intelligent. अरे it took me online. इधर से खोल. This one, ये. अच्छा, बाय द वे मैं अपने बारे में बता दूं तो आई एम इन थर्ड ईयर राइट नाउ. और मेरा जो मेन कोर्स है दैट इज डाटा शेयरिंग. मेरे को नहीं करना डाटा शेयरिंग. हाँ, so जो मेरा मेन कोर्स है दैट इज BE इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग. ओके. एंड आई एम इन हैदराबाद कैंपस राइट नाउ. कूल. तो इसमें कहा था न्यू प्रोजेक्ट पे जाओ. न्यू प्रोजेक्ट पे गए. डिटेक्टिंग जेडी के जावा वर्जन. अरे ये क्या कर दिया इसने. रुको 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 रुको. So just click on this new project, and this will automatically detect the Java versions installed into your Windows operating system. So if you haven't installed Java, so I've already got one video how to install Java into your Windows machine. So you can just check it out there. So I will be choosing the 11 version and click on next and next, and let me give some project name here. ओके, आई गेस First, थोड़ा चेंज हो गया. आई विल ट्राई वन मोर टाइम. इट शोज जावा. आई नेम माय प्रोजेक्ट वेब डेव dev with YP. Cool. Dev with YP. Project will be created in idea projects. What is idea projects? It's an Anmol
चल यार बना दे तू वहाँ पे काम कर। ऑल्दो इसने मेरे से मांगा नहीं है जावा जेडीके वर्जन। आई सर्च जावा जेडीके वर्जन फाइंड इंस्टॉल्ड दैट इज जावा का वर्जन भी एक बार सर्च कर लेता हूँ। मैंने ऑल्दो एक कोड लिखा तो था। जावा भी है भाई, कंपाइलर किट भी है और दोनों चीज़ें हैं, जेडीके भी है और ये भी है। फिर भी एक बार स्टैक ओवरफ्लो चेक कर लेना चाहिए, मैं कुछ वो नहीं चाहता। यू नीड टू पाथ आ रहा है ना मेरा, तो आई गेस पाथ वाथ सब सेट है। भाई बहुत कंफ्यूजिंग चीज़ें लगती हैं पाथ वाथ मेरे को, मैं अपने दोस्तों से पूछता हूँ वो कुछ नहीं बताते, थोड़ा सा टफ रहता है। अरे दोस्त नहीं बताते इसलिए तो ऑनलाइन आया हूँ। ठीक है। So I will be choosing the 11 version and click on next and next, and let me give some project name here. First Java program, or you can give any name and click on finish. So this will open up. भाई रुक जा भाई, थोड़ा सा स्लो स्लो भाई, मैं क्या कर रहा हूँ भाई। ओ भाई हेलो भाई। इंटेलिजे जे अरे आ गया ना जावा का वर्जन, चलो 17 ठीक है। ऐड सैंपल कोड सब कुछ ठीक है, हाँ हाँ सब सब बढ़िया सब बढ़िया। अनटाइटल्ड की जगह मैं इसको कर देता हूँ डेव विद वाइटी। हाँ भाई जो तेरे को बढ़िया लग रहा है कर दे, तू अपना प्रोजेक्ट भी बना देना ऐसा। थैंक यू भाई, नाइस। ये तो वीएस कोड जैसा खुल गया कुछ कुछ। कर ले भाई तू कर ले आराम से। अच्छा इसने एक मेन कोड भी डाल दिया इसमें। ठीक है मेन मेन डाल दिया। माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर कॉन्फ़िगरेशन। चल यार बाद में देख लूंगा तेरे को। तू इधर आ जा तू इधर आ जा। हाँ भाई Now प्रोजेक्ट खोल दिया। initialize it with the first program project. So let me click on got it. Okay, close. Let me close everything from here and close everything from here. And you can see here the first Java program project has been already opened in our ID. So let's go in the setting here. So you can see here it's indexing the ZDK. So let's wait for it to complete this one first. So once this indexing the ZDK is completed, let's go to this source folder here and इंडेक्सिंग इंडेक्सिंग हो गई क्या मेरी? भाई रिड्यूस द इंडेक्सिंग टाइम। भाई तू कर दे भाई, जो भी है मैं अब कुछ नहीं करता। इंडेक्सिंग हो रही है, नीचे हो रही है, अभी देखा मैंने इंडेक्सिंग हो रही है। रिड्यूस द इंडेक्सिंग टाइम एंड सीपीयू लोड विद प्री बिल्ट जेडीके शेयर्ड इंडेक्सेस। कर दे भाई कर दे कर दे कर दे। डाउनलोड इंडेक्सिंग हो गई ना? हाँ हो गई। ये भी हो गया ये भी हो गया। भाई लाइट। right click and click a new Java class. We call it hello and click सोर्स enter. कोड पे उसने किया ना? अरे मेन डॉट जावा आई गया ना? So this will create the Java class here and ठीक है नई क्लास खोलनी है। तो सोर्स कोड में मैंने क्लिक किया न्यू, मैंने फिर जावा क्लास किया। तो मैं अपनी क्लास को क्या नाम दे रहा हूँ? मैं अपनी क्लास को नाम दे रहा हूँ, कौन से वाला प्रोग्राम बनाया जाए, कौन से वाला प्रोग्राम बनाया जाए? मैं अपनी क्लास को नाम दे देता हूँ विंडो क्लास। अब मेरे को ये नहीं पता कि क्लासेस और इंटरफेस के बीच में क्या डिफरेंस होता है यार, बट ठीक है सीख जाएंगे। वो हमारे एक सर हैं जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कोर्स लेते हैं। मैंने उनकी एक क्लास अटेंड नहीं करी, मेरा मिड सेम हुआ था। उस मिड सेम के टाइम पे भी भाई मैं बिल्कुल ब्लैंक था, बिल्कुल ब्लैंक था।
ठीक है, and I went into the mid examination. I got very bad marks, and I was thinking कि as soon as my midterms get over, I'll study that object-oriented programming. But I still don't know anything about that. I haven't studied it. It's very terrible with me right now. कोई बात नहीं. Let's see what's happening. If it is like main, and this will, so this also to write the main method here, and it is like as out and click enter. So this will basically write the system that out the println, write the output here. So it is like hello, this is version course, and just right click here and run the hello.main. So this will basically run our first Java program. Run कैसे The किया main, इसमें? so this will just right click here and run the Run hello.main. hello.main. So this will basically run our first Java program. अच्छा ठीक है. main.main build कर रहा है वो उसको. So it's building here. And if you just see here, so you can see the output. टर्मिनल में आ Hello, this is जाएगा, राइट. version codes. ये So this is कंपाइल how you करने का वो install दिखा रहा है ना. IDE into your Windows operating system and basically run your first Java program. ठीक Thank है. you so much for watching. ठीक है. ठीक है. इंटेलिजेंस कर लिया मैंने डाउनलोड मेरे पास. अरे ये मैं सर्च कर रहा था कि लर्न वन कैसे करते हैं, बट ठीक है. ये भी लाइव बताओ भाई. इतने टैब है, कितने टैब है मेरे पास, गिनती भी नहीं बताता भाई कितने टैब है. कोई बात नहीं. ठीक है. तो ये मैंने कर लिया, इंटेलिजेंस डाउनलोड कर लिया. उसके बाद में आई नीड माई एसक्यूएल इंटेलिजेंस. सॉरी, माई एसक्यूएल है नोड जेएस भी मेरे पास है. मेरे को उसका वर्जन नहीं पता क्या है. अच्छा ये हो गया. एक मिनट रुको, मैं थोड़ा सा हल्का होके आता हूँ. थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगा दिया मैंने यहाँ पे सेटअप करने में. हेलो गाइस, आई एम बैक. हाय. अरे भाई साहब, बालों का देखो क्या बतंगड़ बन गया. भाई बाल कटवाने जाना, देखो फिर डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ मैं. ऐसे ही करके मैं पढ़ाई नहीं कर पाता. कुछ किया भी नहीं, सिर्फ डाउनलोड किया भी, तो सीखा तो कुछ भी नहीं ना. चलो सीखते हैं. तब तक ये देखते हैं. इधर लिखा जाता है प्रेस शिफ्ट ट्वाइस टू ओपन सर्च डायलॉग. ओके, शो वाइट स्पेसेस. स्लो है यार, या तो मेरा कंप्यूटर स्लो है या फिर मैं वो कर रहा हूँ इसलिए स्लो है. अरे हुआ नहीं वाइट स्पेसेस. व्हाट इज वाइट स्पेसेस? What is what is white spaces in my code? Any string of text composed of only spaces, tabs or line breaks. ऐसा है क्या? अच्छा, तो इस चीज को वाइट स्पेस कह रहे हैं. नहीं नहीं नहीं. तो अगर मैं बंद कर दूं इसको, अब नहीं दिखेगा. अच्छा वो मेरे को लाइन. ठीक है, कोई बात नहीं. Alt plus enter with your caret at the highlighted text. Alt plus enter. तो सॉरी हो गया भाई. अच्छा चलो एक काम करता हूँ. एसओ इसमें एस ओ पी लिखा था ना. सिस्टम डॉट इन डॉट प्रिंट. यार सिस्टम डॉट, हाँ होता तो यही है. अब इस पे हाईलाइटेड टेक्स्ट
हाईलाइट तो ये हो रखा है ना वैसे। Alt प्लस एंटर दबाया तो हुआ तो कुछ नहीं। Alt प्लस एंटर, अरे कुछ नहीं हुआ। हाँ रिडंडेंट कॉल है ना, सिस्टम डॉट आउट डॉट एल से हो जाता है सिस्टम। सिस्टम, अरे यार क्या होता था देख, प्रिंट कमांड इन जावा, सिस्टम प्रिंट लिखना चाहिए ना, सिस्टम प्रिंट कमांड इन जावा। अच्छा सॉरी सॉरी भाई, मेरी गलती है, सॉरी। ठीक है चलो, ये भी है, शिफ्ट F10। अच्छा ओके, shift F9 to start debugging your code. We have set one breakpoint for you. Is this a breakpoint? Shift F9। अरे एरर है भाई क्या, हटाओ इसको। अब करो शिफ्ट F9। कर ले यार, बोला वो कर ले। डीबगर भाई, डीबग करना थोड़ा सीखना पड़ेगा, चलो अभी तो लाइट लेते हैं इसको। हाँ टर्मिनेट कर दे भाई प्रोसेस, मेरा टर्मिनल आ गया, मैंने एक नया क्लास बना रखा है, लाइट है सब। ठीक है, अब मेरे को नोड जेएस करना है। Guys, today I'll be showing you how to install Node.js in your Windows system. So वो first मेरा step लैब बंद हो is गया, एक go सेकंड। to your favorite browser, just type Node.js, and before that, let me check if Node.js is already installed in my system or not. So check that. Let me type Node hyphen version. So Node is not recognized, so I haven't installed Node.js in my system. So let me click on the official website and website of Node.js. And if you want to install the long-term support, you can click on 12.18.3. So as if I'm recording the video, so this is the latest version, and this is the current version. So I'll be doing the current version. So just click on that, and it will automatically is my download folder of Node.js. Click on next. Okay, accept the license agreement. Let it be the current default. Okay, let me do the React application.js application and type node-p and सी आई ऑल्सो हैव नोड। भाई ये पता नहीं मेरे and you लैपटॉप can में क्या check क्या इंस्टॉल्ड है। this is my latest Node.js version installed in my system. Thank you so much for watching, and this will also install the npm. So you will be using npm to write the React app. So I will demonstrate how to write a first React app in next video. So until then, keep watching. आ गया, Thank you. एनपीएम भी आ गया, एनपीएम भी आ गया। चलो इसको बंद कर देते हैं एक बार, लेकिन मैं एक बार यहाँ पे नोड जेएस की फाइल जरूर खोल के देख लेता हूँ। ये देखो नोड जेएस यहाँ पे है ना, नोड जेएस सब कुछ है मेरे ख्याल से। तो चलो शुरू करते हैं फिर। तो इसने हमको सबसे पहले यहाँ पे बोला है, वी विल बी बिल्डिंग पैकेजेस, पैकेजेस क्लासेस एंड इंटरफेसेस। ठीक है, इसने हमको बोला, सुनते हैं Classes इसको। and interfaces required for building the Spring Boot application. So for that, quickly go to your browser and search for Spring Boot Initializer, and this will is first thing from start.spring.io, and let me click this default Maven project, Java language, and let me click अरे this भाई snapshot भाई 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 भाई, default, and you can give ये तो Maven बड़ा project. So फास्ट this है। first thing from start.spring.io, and let me click this default Maven project, Java language, and ठीक है भाई, करते हैं ट्राई। इनिशियलाइजर ले भाई, आ गया इनिशियलाइज भाई, डुअल पीसी हो तो अच्छा लगे ना। अबे ग्रैडी, ग्रैडल नहीं,
कौन सा किया उसने? मैवन प्रोजेक्ट है ना, मैवन प्रोजेक्ट जावा में। वर्जन कौन सा? 2.5.2 है। मैं जो सिलेक्ट हो रखा है उसी पे छोड़ देते हैं भाई। लिटिल लिटिल फियर्स लगता है मेरे को इन सब से। Let me keep this snapshot default, and you can give some group name like version codes or your name. ग्रुप ग्रुप मैं वही रखूंगा भाई। डेव विद वाईटी, डेव विद वाईटी। And the artifact ID maybe student system, and you can go give some description here. मेरे प्रोजेक्ट का मेथड है, अच्छा। तो मैं इसमें लिखूंगा रन वन लिख देते हैं यार। लेकिन नहीं, वो नहीं करना हमको। रन वन नहीं लिख सकता मैं। अटेम्प्ट भी नहीं है। चैप्टर वन। लर्निंग स्प्रिंग बूट विद वाईटी। Full stack application using Spring Boot and React. And I have got the 11 version of Java. So if you have 8 or 16, so you can choose accordingly. So I will be keeping this default here as well. And we need to add some dependencies here. So for that, let's type Spring Web, and we'll be using dependencies here. So for that, let's type Spring स्प्रिंग Web, वेब। and we'll be using the MySQL. Let's add the MySQL driver as well, ओह फक। and JPA for databases and all the stuff. भाई ये So, बहुत तेज करा रहा है and भाई। we'll be using the MySQL. So for that, it's like स्प्रिंग Spring वेब। Web, and we'll be using the MySQL. Let's add the MySQL driver as well, माई and JPA for जेपीए। databases and all the stuff. So this will be enough, I guess. So ठीक है। जेपीए भाई, जेपीए। जेपीए। if we require other dependencies, we will be adding in between the videos, and just click on this generate. So this will basically generate the jar file. So just save in your preferred location. I will be saving in my desktop, and click on save. And let me close this one, and let me extract it here. So just right click, and let me extract भाई बड़ा तेज दौड़ता है भाई। the jar file. So just save in your preferred location. I will be saving in my desktop, and click on save. इसने Preferred वो वाली फाइल किधर बनाई थी यार, अपना प्रोजेक्ट so फाइल। without here, still अच्छा ठीक है ठीक है, लाइट लाइट लाइट। good. कहीं पे बना दो, मैं इसको सही कह रहा है, डेस्कटॉप पे डालता हूँ। ठीक है। भाई इसको बंद करना पड़ेगा मेरे को, ये इन सबको मैं पिन करके अगर मैं बंद कर दूँ, क्लोज ऑल कर दो भाई। लिटिल बेटर। तेरे को मैं जनरेट करता हूँ और तेरे को मैं डेस्कटॉप पे डेव डेव विद भाई पता नहीं भाई, चूतिया सा नाम है बट सब जगह डाल दिया भाई। और मैं गाली भी दे रहा हूँ, देखो गलत बात होती है गालियाँ देना, है ना। लेकिन बहुत गंदी आदत है, ठीक करूंगा मैं इसको। And React, and I have got the 11 version of Java. So if you have 8 or 16, so you can choose accordingly. So I will be keeping this default here as well, and we need अरे पीछे हो गए तो। and uh, and let me close this one, and let me extract it here. So just right click, and let me extract all, and इधर click है on भाई। extract. So this will extract the Spring Boot application. So just right click, and let me extract all.
and click on extract. So ठीक है. Nice. to extract the Spring Boot application. And now let me open my IntelliJ. So if you have got other ID, STS or Eclipse, so you can use that as well. So for this video, I will be using the IntelliJ. So if you don't know how to install IntelliJ and run this, I've already got one video. कर लिया सर Go to my इंस्टॉल. desktop here and let me just choose this student system and click क्या किया OK इसने? here and just click on open. ओपन कर दिया उसने. ठीक है. तो मैं अपना ये प्रोजेक्ट को अगर क्लोज करूं, एग्जिट कर दे भाई. फिर मैंने कहा कि मैं अपना इंटेल आईजे खोल दे भाई. Okay, let me go to my desktop here and let me just choose this student system and click OK. So this will load our application. ठीक है. And just click on this import. So this will मेवन import. बिल्ड स्क्रिप्ट फाउंड ऐसा करके कुछ लिखा है था. तुमको सर क्लोज कर देंगे. देखो हम थोड़ा सा हमसे डील कर लेना. क्लोज कर दो. तुम भी एक बार क्लोज हो जाओ भाई. ट्रस्ट प्रोजेक्ट्स. दिस विंडो. ये कुछ तो डिपेंडेंसीज वगैरह रिजॉल्व कर रहा है. यार मैंने ये हटा तो दिया था. ऑटोमेटिक है भाई. करता रहे यार. मैं तेरे आईडी को कुछ कर रहा हूँ. For the manual. So this might take some time if you're doing it for the first time. So if you have got multiple Java versions, so you can see here it's showing the ZDK 16. So I want to change this Java version to 11. So for that, just click on this file and just click मैं on this 17 project यूज कर रहा structure. था. And instead of the 16, I want to choose the 11. So if you want to switch between the multiple Java version, I have already got one video. You can check out on the description आई गेस and click on 17 पे apply. स्टिक So this रहूंगा. will change the JDK version as well. And let me click OK. So now I want to create all the packages. So let's click on this student system and source and main and in Java. And inside this package student system, we want to create some packages. And the first package is model. So this model package is basically used to create all the entities and graders. ठीक है. तो बेसिक ओहो एसक्यूएल रहेगा. चलो कोई बात नहीं. तो मैं चैप्टर 1 में गया. सोर्स कोड, मेन कोड, जावा कोड. सोर्स कोड, मेन कोड, जावा कोड चैप्टर 1 में. ठीक है. इसके साथ में मैंने एक, हाँ स्लो तो है देखो, मैंने एक पैकेज बना दिया जिसका उसने नाम क्या दिया, मॉडल. मैं भी दे देता हूँ मॉडल नाम. मॉडल पैकेज बन गया हमारा. हाँ इसने क्या कैसे So है. this model package is basically used to create all the entities and graders, setters, and also the constructor as well. Just type student and click enter. So this will create the student class here, and it's saying safe mode limited functionality. Okay, let me click on cross project and click on cross project. And also I want to create one more package and it's repository. So just write repository
And this package is basically for JP implementation. So just right click and click a new Java class and let me create one interface and let तो इसने ये कहा कि जो मॉडल्स थी उसमें तो उसने सारी एंटिटीज डिफाइन कर दी, ठीक है। मॉडल भी एक पैकेज था, ठीक है। फिर इसने एक नया पैकेज डिफाइन किया जिसका नाम था रिपोजिटरी, ठीक है। उस रिपोजिटरी को भी इसने ये कहा कि ये भी पैकेज है, और इसमें क्या है, right click and click a new Java class and let me JP implement the and this package is basically for JP implementation. So just right click and click a new Java class and let me create one interface and let me call it student repo teacher. ठीक है, ठीक है। इतना काम करते हैं एक बार, जो जो इसने कहा। तो इसमें न्यू जावा क्लास स्टूडेंट क्लास बना दी, एंटर, बन गया। फिर इसमें जाके मैंने एक नया पैकेज डाला जिसका नाम उसने दिया रेपोजिटरी, ठीक है। और इस रेपोजिटरी में भी मैंने एक नया जावा क्लास दिया जिसको स्टूडेंट नेम किया और उसको इंटरफेस कर दिया, मैंने एंटर दबा दिया, ठीक है। हम फॉलो, And click enter. So this will basically create the interface तो student फक उसका नाम repository. स्टूडेंट रिपोजिटरी था। इम्पेशेंट हो जाता है, इम्पेशेंट हो जाता है स्टूडेंट रिपोजिटरी, तो कर दो भाई, रिफैक्टर डन। And also we will be creating the other package and its controller. Let me extract कंट्रोलर, controller. So this controller is basically for mapping all the HTTP methods. We will be implementing get post. This controller is basically for mapping all the HTTP methods. We will be implementing. मैपिंग ऑल व्हाट मेथड्स, सुनाई दिया तुमको कौन से मेथड्स, मैपिंग ऑल, आई गेस एचटीटीपी बोला वो, एचटीटीपी मेथड्स, बट आई डोंट थिंक सो, क्या पता नहीं, चलो आगे पता चलेगा, मैंने लिख दिया। Get post and whatever the cloud operation will require. So just type student controller and click enter. So this will create the student controller class. Also, we want to create one new package and let me call it service. And inside the service, we want to create one interface and let me call it student service. And also, we will be creating one class as well, and which will be the student service implementation. So these are the ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, काफ़ी कुछ किया इसने। तो एक न्यू पैकेज बनाता है सबसे पहले जिसका नाम कंट्रोलर है, ठीक है। इस कंट्रोलर में इसने एक नया जावा क्लास डाला है ना, हाँ क्लास है, स्टूडेंट कंट्रोलर बना दे, ठीक है। रेपो हो गया, और इसके बाद में जावा क्लास इसने फिर सर्विस करके डिफाइन किया, क्लास नहीं है यार, पैकेज, पैकेज सर्विस, ठीक है। और इस सर्विस में इसने सबसे पहले जावा क्लास डिफाइन किया, स्टूडेंट सर्विस, एक क्लास और एक इंटरफेस, स्टूडेंट सर्विस इंटरफेस। अच्छा, तो packages and class, creating one class as well, and which will be the student service implementation. So these are the packages. ओके, पैकेज नहीं यार, थोड़ा इम्पेशेंट हो जाता हूँ।
and class we will be using for creating the backend application. So now once we create all the packages, so we will start writing the code for model package. Before that, I would like to mention that I will put all my codes inside this YouTube Origin Codes GitHub account. So you can just go to this account and I will also put the link into the description. Just go to this repository and inside here you can see this full stack app. Just go inside here and click on source, click on main, and click on this Java, and you can see all the packages here. So you can go through every packages to see the codes, and if you get some error, you can correct from there as well. So now let's start writing for this model class. So here we need to annotate this class with entity. ओ भाई, अभी तो सिर्फ 7 मिनट का हुआ, 40 मिनट को और करना। देखिए यूट्यूब पे क्या चल रहा है भाई। क्यों एक साथ बैठ के नहीं कर सकते क्या तू? देखो आपका मसला था, अच्छा लगता है यूट्यूब का मसला। क्या लाइव वाइव बंद हो गया क्या? ऐसा लाइव का ये दिखा रहा है। हाय अच्छा लगता है फर्स्ट टाइम यूट्यूब पे आना। ऑल्दो कोई देख नहीं रहा, मैं कोई देखेगा भी नहीं, बट ठीक है खुद के सेटिस्फेक्शन के लिए। शायद ये 7 मिनट में कभी ना देखता, बट आई ट्राई कि और ज़्यादा देखूँ अभी इसको मैं। पता नहीं क्या क्या चलता रहता है इन सब में। व्यूज अरे मैं खुश हो गया भाई एक व्यू देख के। मेरे को लगा मेरे ही हैं, मतलब ऐसा सॉरी, मेरे को लगा कि कोई आया देखने। अच्छा बाय द वे ऐसे करेंगे, स्टॉप कर दूंगा मैं। हाँ तो तुम लोग को ये दिखेगा ना। ये क्या है भाई? कौन है एक व्यूअर? हेलो हेलो भाई, चैट में हाय लिख दो अगर कोई एक व्यूअर लाइव है तो। नाइस है भाई। चलो मैं कंटिन्यू करता हूँ। हाँ तो यहाँ पे मॉडल कोड लिखना था, तो इसने कहा For this model class. So here we need to annotate this class with entity annotation, and we will write some attributes here. So क्या बोल गया ये? class with entity annotation, and so here we need to annotate this class with entity annotate class with entity annotation, and we will write some attributes here. So private string. So before than that, if you want to include भाई देखो, मेरा ये लिटरली फर्स्ट टाइम मैं कुछ भी करता हूँ तो आई सर्च एवरीथिंग, मतलब कि इफ देयर इज रिटन एंटिटी समथिंग ऐसा करके कुछ, तो मेरे को नहीं पता कि उसका सिग्निफिकेंस क्या है। एंड अकॉर्डिंग टू दी कोर्स ऑफ नेचर के, मतलब जैसे पढ़ते हैं पता होना चाहिए, तो आई मे बी ट्राई एंड डू समथिंग लाइक गूगल ऑब्वियसली। सो आई सर्च what is entity दवा लिख देते हैं। हाँ ये
class of type entity indicates indicates a class that at an abstract level is correlating with the table in the database. अच्छा. Each object enunciate, instantiated by this class indicates a tuple of table itself containing the information of latter. I recommend that you find out about what object relational mapping is. ORM, ठीक है. I also recommend this page. A class can be mapped to a table. You on a TLDR, ठीक है. तो बेसिकली अगर मेरे को डेटाबेस में चीज़ें डालनी है या फिर मेरे को डेटाबेस से लिंक करनी है चीज़ें, तो आई हैव टू मेंशन दैट क्लास एज एन एंटिटी. आई मेरे को ये फील आया. तो @entity कैपिटल ये क्या. भाई जावा और जकार्ता. What the hell? Java's Java what persistence versus Jakarta dot persistence. It's okay, right? देखो इस चीज में चैट जीपीटी बहुत काम आता है. तो मैं काम करता हूँ थोड़ा. चैट जीपीटी के साथ लिटिल लिटिल मस्ती कर लेते हैं. गया मेरा एक व्यूअर. मैं बहुत बच्चा हूँ यार, बहुत बच्चा हूँ. क्यों देखा मैं चैट. मेरे को पता है कोई नहीं आने वाला. व्हाट इफ अरे चैट जीपीटी चला ही. व्हाट इफ मैं यूट्यूब पे जाऊँ एंड मैं सब्सक्राइब कर दिया मैंने उसको. कोई नहीं. व्हाट इफ मैं लाइव्स में जाऊँ. ऐसे तो काफी कुछ लाइव चलेगा. ये ठीक है भाई. लाइट ये सब लाइट बंद करो, पढ़ाई करो. अच्छा बाय द वे तुम लोग को लाइट का मतलब ना पता तो LITE लाइट मतलब लाइट ले लो, जिंदगी को लाइट ले लो. ठीक है. This is the font size of this. You can just go to this file and click on setting. Inside editor, you can see the font here, and you just need to increase this size. Okay, I will put something like 16, and if I click on apply and click OK, so this will increase our font size as well. So now let's start writing the code, and let me call it private int id and private string name and private string address. So we need to annotate this ID with
ID annotation. So this रुक जा भाई. प्राइवेट एंड आईडी समझ गया. ठीक है. प्राइवेट स्ट्रिंग नेम समझ गया. Why private not allowed? so we need to annotate this ID with ID annotation. So this will basically make it the primary key and also the generated value and strategy generation type identity. So this will make the ID auto incremented as well. चलो एक बार फॉलो करते हैं हमको इसको. प्राइवेट एड्रेस. अब बताओ. बट क्यों? क्योंकि मैं पागल हूँ ना. मैं पागल हूँ. सर्विस वाले में कर रखा है. जब स्टूडेंट जावा में करना है तो क्यों अनमोल को डेढ़ शाणा बन के बिना सोचे समझे कर देना है काम. गलत बात. बाय अनमोल. इसको बताओ. इसमें काम करना है मेरे को. इसमें अब इंपोर्ट करो. सॉरी इंपोर्ट नहीं करना. एंटिटी बनानी है. एंटिटी में कैपिटल ई. एंटिटी. ठीक है. इसके बाद प्राइवेट इंट आईडी. प्राइवेट स्ट्रिंग नेम. प्राइवेट स्ट्रिंग एड्रेस. नाइस लग रहा है थोड़ा थोड़ा. ठीक है. अब उसने कहा Address. We need to annotate this ID with ID annotation. So this will basically make it the primary key and also the generated value and annot annotating with ID and making it primary key. um, Generated value. साइन आउट हो गया भाई. Every entity object that is stored in database has a primary key. Once assigned, the primary key cannot be modified. It represents the entity object as long as it exists in database. As an object database, object object DB Lite. Every entity object in database is uniquely identified. Every entity object in database is uniquely identified and can be retrieved from database by the combination of its type and its primary key.
ठीक है, ठीक है। प्राइमरी की वैल्यूज आर यूनिक per entity class. Instances of different entity classes. ओके, थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है, थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है कि मतलब एक क्लास का जो प्राइमरी की है वो यूनिक होगा पर एंटिटी। हमने सबसे पहले एक एंटिटी डिफाइन किया तो हम उसका प्राइमरी की डिफाइन कर रहे हैं। हाउएवर अगर हम सपोज दो डिफरेंट क्लासेस बना रहे हैं तो दोनों का प्राइमरी की आईडी हो सकता है। सही बात है कि नहीं? ठीक है। ओनली एंटिटी ऑब्जेक्ट्स हैव प्राइमरी की। इंस्टेंसेस ऑफ अदर persistable टाइप्स आर ऑलवेज स्टोर्ड एज पार्ट ऑफ देयर कंटेनिंग। ठीक है। Marks a field as primary key field. This ID with ID annotation. So this will basically make it the primary key. And also the generated value and strategy. भाई नींद तो काफी आ रही है। पढ़ते हैं तो नींद तो आती है। देखो कैमरा इधर। कोशंबा भाई कोशंबा। मैं कार्टून बन गया। बाय द वे तुम लोग को स्ट्रीम घंटियां होंगी इधर। नहीं सीधी आ रही है। The strategy attribute is used to specify the primary key generation strategy.
must use to generate the annotated entity primary key. It is an optional attribute. ठीक है, strategy values are defined in which are as follows. Auto, based on databases support for primary key generation framework, decides ठीक है, identity. In this case, database is responsible for determining and assigning the next primary key. In this case, database is responsible for determining and assigning the next primary key. A sequence specifies a database object that can be used as a source of primary key values. The sequence specify a database object that can be used as a source of primary key values. टफ तो है देखो भाई ये सब कुछ. Generation, generated value, and strategy, generation type identity. So this will make the ID auto incremented as well. So now we need to create the constructor. So for initializer, you can just use Alt and Insert. So this will basically give you the shortcut for creating all these constructor getter setter. So just click Alt and Insert and just select this constructor and let me select none. And also select this constructor and let me select none. And also for getting the getter and setter, again click Alt Insert, or also you can just right click and here you can see the generate as well. Just click on this generate and just click on getter and setter and select all the fields and click OK. So this will generate all the getter setters required for this model class. So now we also want to create the JPA. Repository here. So once we write the code for this model class, we will be writing for this repository here, and we just need to extend this with, let me write extends and just write JPA repository, and we just need to give the entry here. And once we write the code, we also want to create the JPA repository here. So now it is required for this model class. So now we also want to create the JPA repository here. So once we write the code for this model class, we will be writing for this repository here, and we just need to extend this with, let me write extends and just write JPA.
राइट यू से क्या होता था अपडेट ठीक है भाई Model class we will be writing for this repository here, and we just need to extend this with the right extends and just write CPA repository, and we just need to give the name of the model class and its student and the type of the primary key, so it's integer. So we have student repository, and we just need to give the name of the model class and its student and the type of the primary key, so it's model class and its student and the type of the primary key, so it's integer. So we have given the primary key as id and the type is integer, so we need to write the integer here, and also we need to annotate this with the repository annotation. So after writing the model and repository, so we will be connecting our Spring Boot application with MySQL. ओके हाँ इसको एस्केप करो यार Database. कहाँ है भाई यूट्यूब हाँ सो 1 घंटे 12 मिनट की अभी तक स्ट्रीम हो चुकी है राइट नाउ मैं 48 मिनट्स के 10वें मिनट पे हूँ एक्चुअली ज़्यादा कुछ नहीं सीखा इट इज़ क्योंकि मैं सीधा स्टार्ट कर रहा हूँ इसको तो ज़्यादा कुछ नहीं सीखा बट हाँ इसने बैकएंड पे मेरे से रिपोजिटरी बनवाई है उसको डेटाबेस से लिंक करवा रहा है क्लासेस बनवा रहा है अभी तक इसने ये सब करवाया है मेरे से नेक्स्ट स्टेप जो मैंने इसका देखा दैट इज स्प्रिंग बूट कॉन्फ़िगरेशन फॉर कनेक्टिंग विद माई एसक्यूएल सो राइट नाउ मेरे लैपटॉप में माई एसक्यूएल इंस्टॉल नहीं है
सो और मेरे को भूख भी लग रही है, रात के 4:30 बज रहे हैं, तो मेरे को भूख भी लग रही है। आई गेस मैं थोड़ी सी ब्रेड खाऊंगा, थोड़ा सा देख के, एंड देन आई विल कम बैक विथ न्यू स्ट्रीम। ये वाली को ज़्यादा बड़ा नहीं करते। ठीक है, तो इस स्ट्रीम को बंद करते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा कि इसमें क्या क्या हुआ, ताकि मेरे को भी ध्यान रहे कि मैंने क्या क्या पढ़ा। बाय बाय।